Prime Minister Narendra Modi has inaugurated the Bhairabi-Sairang railway project, which has been built at over rupees 8,070 crore. PM Modi also inaugurated the three railway services, in fact, from Aizawl, which will connect the capital city of Mizoram with Delhi, Kolkata, and Guwahati. So right now we are being connected with Shobhik Roy Chaudhary, the digital head of Prague News, our sister channel. Shobhik, a big moment for Mizoram. Mizoram has finally entered into the Indian railway network. So how do you think, what's your take on how it will benefit Mizoram overall, in terms of connectivity? Right, Zahir. I think this today is a very historic moment for the people of Mizoram. And I think with this new Bhairabi Sairang railway line that is exactly 51.38 kilometers in length that has been connected. So this becomes the fourth northeastern capital to be connected with Delhi. And for the first time after the independence, Mizoram has gained railway connectivity with the country's capital. So this actually marks as a historic moment for the state, and with Prime Minister Narendra Modi's visit and the inauguration of today's new railway line, I think a new future opens up for the state of Mizoram. And the good news is there will be three trains that will start running from the Sairang station, which is very close to Aizawl. And with the new Sairang Delhi Rajdhani Express that will start running, this will create connectivity of Mizoram directly to the national capital, and along with that, two more express trains will start running. One is from Sairang to Guwahati, and the other one will be from Sairang to Kolkata. And I think for years and years after the independence, people have been struggling to reach and to connect with the other parts of the country, especially from Mizoram. There were only two modes of transportation. One was road and the other one was air. And with the introduction of the new railway line and the introduction of trains, I think the most meaningful impact that will come for the people of the state, that will be the price of the essential commodities will drastically come down. And if you take into consideration the volume of one goods train that can actually carry the loads of 100 trucks, so it will actually be very beneficial financially and also for the people of the state. And through the train services, it can become a very affordable and fast way for the people to connect with the rest of the country. Back to you. Yes, Shobhik, one more thing. The officials in the NF Railway has recently informed that they are mulling or planning rather, and plans are rather underway to extend the railway network from Aizawl to places near the Myanmar border. So that's a big development in the sense that it's already in the plans. So do you think it will help in mobilization of troops, because Mizoram shares a very a porous border kind of a thing with Myanmar, and recently we have seen uproars regarding illegal immigration. So do you think this will in fact help in mobilization of troops and equipment in the future, of course, to the Myanmar border? Yes, you are absolutely right, Zahir. I think with this Bhairabi Sairang railway line extending to other parts of the state, this will actually prove to be a huge strategic advantage, I would like to say, for our country, because when the railway line will reach the borders of Myanmar, our troops can be easily mobilized in terms of crisis, in terms of emergency, and I think this actually will give us an upper hand in terms of times of distress. And yes, with the further extension into other parts of the state, the new railway lines will actually prove to be much more beneficial, not only to Aizawl but other parts of the state. And also I would like to mention one very important thing here. I think with the new railway line that has been inaugurated today, we have actually achieved a massive engineering feat. I would love to tell you that one of the railway bridges that has been built in this new 51.38 stretch, 38-kilometer stretch railway line, one of the posts of the bridge is actually
higher than the height of Qutub Minar. So that's actually a fantastic engineering feat that has been achieved. And with all the mountainous regions in the state, I think it will be a engineering marvel to watch how we gain connectivity till the last point of our country, that is the Indo-Myanmar border. Back to you. आपने जो ये कनेक्टिविटी को लेकर बात कही है बॉर्डर इलाका तक, मिजोरम जो है बंगाल और म्यांमार के सीमा को साझा करती है, लेकिन अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत जो प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं या जमीनी स्तर पर उनको हकीकत में बदला जा रहा है, तो पूरे परिदृश्य को कैसे देखते हैं इन द सेंस ऑफ टूरिज्म और टूरिज्म एंड टूरिज्म हब के तौर पर, क्योंकि मिजोरम तक पहुंच अभी भी जो है बहुत दुर्गम है, रेस्ट ऑफ इंडिया का है या वो वर्ल्ड के बहुत कम टूरिस्ट ही अब तक पहुंच पा रहे थे, और रेलवे कनेक्टिविटी और हेलीकॉप्टर सर्विस जो शुरू होने जा रहा है, इससे किस तरह का परिवर्तन, किस तरह के चेंजेस आएंगे पूरे मिजोरम के परिदृश्य में? जी 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 रंजीत, ये बात आपने बिल्कुल सही बोला कि पहले पर्यटक के लिए एक बहुत मुश्किल वाली घड़ी होती थी मिजोरम आने के लिए। पहले दो ही ऑप्शंस थे हमारे पास, एक है सड़क से जाना पड़ता था और दूसरा है कि आपको विमान सेवा लेना पड़ता था। विमान सेवा हालांकि थोड़ा महंगा हो जाता है, और अगर आपको सड़क के लिए जाना पड़ता है, सड़क का थ्रू से जाना पड़ता है, वो बहुत ही मुश्किलात वाले हालात हो जाते हैं, और रास्ते भी उतने अच्छे नहीं थे जैसे कि सब लोगों ने मैक्सिमम लोगों ने टीवी में देखा होगा। तो ये जो नई रेल सेवा जो शुरू हुई है, ये सच्ची में ये पर्यटकों के लिए एक बहुत बड़ी देन है, क्योंकि मिजोरम एक इतनी खूबसूरत पहाड़ों से भरी हुई देश है जो कि बिल्कुल टूरिज्म की तहत से अगर देखिए तो अब तक उस टूरिज्म वहां तक अच्छे से पहुंच नहीं पाई थी, मेनली क्योंकि ये जो आपके रास्ते हैं और जो फ्लाइट सर्विस, यही दो ऑप्शन थे और कोई अफोर्डेबल ऑप्शन अभी नहीं था, क्योंकि रेलवे लाइन आने के बाद अभी जब ट्रेनें चलेंगी तो लोगों के लिए एक सस्ता और टिकाऊ एक जरिया होगा लोगों के लिए जाने के लिए, और पर्यटकों के लिए पर्यटक का जो संभावना है वो लोगों के लिए खुल जाएगा, और अलग अलग तरीकों के आपके होटल्स होंगे, फिर और भी ज्यादा लोगों के लिए अर्निंग अपॉर्चुनिटीज आएंगे। तो उसके लिए मैं जो देखता हूं कि एक बहुत ज्यादा रेवेन्यू बूस्ट होने वाला है मिजोरम के लिए। रंजीत, शोभिक, एक बात कहनी पड़ेगी कि जो रेलवे नेटवर्क को पहुंचाया गया है मिजोरम तक बहुत चैलेंजिंग टास्क था। हम अक्सर जब भारत में रेलवे प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं तो कोंकण रेलवे प्रोजेक्ट की बात करते हैं, इंजीनियरिंग का बेमिसाल एक नमूना है, लेकिन अब पूर्वोत्तर राज्य में चूंकि कनेक्टिविटी बढ़ाई जा रही है और केंद्र सरकार की योजना भी है कि अष्टलक्ष्मी को एक दूसरे के राजधानियों से जोड़ा जाए, एयर कनेक्टिविटी उड़ान योजना के तहत की जा रही है, लेकिन पूर्वोत्तर भारत की जो ज्योग्राफिकल कंडीशंस है उसको निश्चित तौर पर रेलवे के लिए बहुत चैलेंजिंग टास्क था, इसको पूरा कर लिया गया है, कैसे देखते हैं इसको? जी, आपने सही बोला कि इसका जो ज्योग्राफिकल लोकेशन एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है हमारे भारतीय रेलवे सेवा कर्मियों के लिए और इंडियन रेलवेज के लिए। बट जैसे कि ये जो नया 91 किलोमीटर वाला जो लाइन आपका बना है बैराबी साइरांग, तो इसमें इंजीनियरिंग फीट इस तरीके का हमारे इंडियन रेलवेज ने हासिल किया है, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि जो एक ब्रिज है उसका जो पोस्ट है, उसका जो हाइट आपके दिल्ली के कुतुब मीनार से भी ज्यादा है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके का चैलेंजेस के थ्रू ये ब्रिज को बनाया गया है। और आप जानते हैं कि पूरे स्टेट में मिजोरम में पहाड़ियों से भरा हुआ है, तो इसके अंदर यहाँ तक जब तक रेल लाइन बन गया है तो मुझे भी आशा है कि हमारे इंडियन रेलवेज आगे तक भी इसको आसानी से इसको हासिल कर पाएंगे। रंजीत, शोभिक, एक अंतिम क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से करना चाहूंगा। मेघालय में रेलवे प्रोजेक्ट का काफी विरोध हो रहा है। मेघालय की जो लोकल बॉडीज है, हालांकि सरकार तो चाहती है कि मेघालय में रेलवे कनेक्टिविटी बढ़े, लेकिन वहाँ के जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको लगता है, वहाँ के जो एथनिक ऑर्गेनाइजेशन है उनको लगता है कि
अगर रेलवे कनेक्टिविटी बढ़ती है तो इन्फिल्ट्रेशन ज़्यादा होगा और उनका जो अस्तित्व है वो खतरे में पड़ सकता है। मिजोरम में हालांकि इस तरह का कोई विरोध नहीं देखा गया, तो निश्चित तौर पर क्या आपको लगता है कि मिजोरम में जो रेलवे एक नई शुरुआत हुई है, ऐतिहासिक शुरुआत हुई है, इससे मेघालय पर भी असर पड़ेगा? क्या वहाँ बदलाव आएगी? जी जी, सही बात बोल रहे हैं आप कि ये जो इन्फ्लक्स का जो प्रॉब्लम है ये मेघालय में ही नहीं, खाली नॉर्थ ईस्ट में सिक्किम में भी देखा गया था कि जब रेलवे लाइन इंट्रोड्यूस करने का बात हुआ था उस वक्त बहुत ज्यादा संगठन से विरोध आया था। और जबकि मिजोरम अभी रेलवे लाइन से कनेक्ट हो गया है और पर्यटकों के लिए भी एक नया अनुभव होगा, तो मुझे यही लगता है कि मेघालय में भी और सिक्किम में भी रेलवे लाइन आने के लिए जो विरोध हो रहा था उसमें थोड़ी सी नमी आनी चाहिए, क्योंकि हमारे सामने ही एग्जाम्पल है। मिजोरम कनेक्ट हो गया, तो इसको देखते हुए मैं बहुत कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि इससे लोगों का जो थिंकिंग है टुवर्ड्स ये जो आप इन्फ्लक्स का बात जो बोल रहे हैं मेघालय में, तो ये थिंकिंग काफी चेंज होगा लोगों के लिए। और मुझे आशा है कि बहुत ही जल्द मेघालय में भी और सिक्किम में भी रेल लाइनें आएंगी। रंजीत जहीर कुछ पूछना चाहते हैं आपसे? Veering off from the inauguration of this railway line, PM Modi in his speech made a very brief statement on Operation Sindoor. He said that the armed forces made the nation proud by giving a befitting reply to the enemy or Pakistan. But he also mentioned that the made in India weapons played a significant role in India's reply or reply to Pakistani terrorists aggression. So how do you see that particular statement, made in India weapons played a significant role? What's your analysis on that? Right, Zahir. I think Operation Sindoor was a significant mark for our air defense security. When there were missiles fired from the other side of the border, our anti-air systems, anti-missile systems were able to intercept each one of those missiles. And I think this not only took us by surprise, but in fact shocked the entire world with the superior air defense system that we had developed, which was not tested yet, but for the first time it was tested completely during Operation Sindoor. Till then, I think there was a preconceived notion that Israel was very superior in the air defense system with its Iron Dome. But with India's own Akash system, we have been able to achieve that mark, and I think we are up there with Israel, where we have been able to defend our skies from the perpetrators and attacks that were carried out during Operation Sindoor. So I think, yes, Made in India has strongly, and I would say again very strongly, impacted the manufacturing capabilities that we have had, and I think the whole world has witnessed our prowess and our capabilities of our indigenously made weapons and manufactured armory. Back to you. Well, thank you, Shobhik, for joining us from the newsroom.